Hey guys, and welcome back to another episode of Not Bilal, me and the boys plus one. So, Hello. hey guys, what's up? Hello, hello. Hello. Where's the what's up, man? So, yeah, Raj, turns out ke Bilal actually ditched. Oh no. So, Sad. yeah, Sad. and we were getting some comments ke this Bilal guy, I don't like this Bilal guy, and Bilal guy is this, and Bilal guy is that. So we ended up kicking Bilal out. Damn. सो उसको रिप्लेस करने के लिए आज हम लाए हैं सादिया को who claims to be a girl लेकिन I don't know. But she's in the I boys haven't group. seen her. Yeah, she's in the boys group, so Mm, technically she is an honorary boy for now. So I'll Sadia, would take you it. like to introduce yourself? Assalamu alaikum. I am Sadia और गलती से मैं इन लोगों को जानती हूँ, I guess. How else do I introduce myself? क्यों जानती हो मैं? कैसे और जानती हो क्यों मैं? जानती हूँ कैसे जानती हूँ I'd say anime group एक था A-pop जिसमें I believe जवाद से मेरी पहले मुलाकात हुई थी and then we got to know each other over a game called Warframe. बाद में आजी भी उधर ही मिला था and बस तब से चल रही है. Moved on to different games. We started playing PUBG together as well, which later on Jawad ditched and ran away from and never played Damn. again. But This guy is a big ditcher, man. very Germany भाग गया तो बस सब तो Pakistani peasants, man. true. पाकिस्तानी Oh peasants my की God, सारी this guy. हमारी बातचीत ही online हुई है. We've never met in person. Everything we know about each other has been through an online platform, which is why I समझ आती है कि they're skeptical ये बंदी है कि नहीं. Damn. Voice changer. So I good, don't know. man. Yeah, exactly. Voice changer. Like, पता नहीं मैं किसी दिन सादिया मीटअप के लिए बुलाए मैं वहां जाऊं और कोई बड़ा सा बंदा आए मेरा वॉलेट और गाड़ी छीन के भाग जाए. Like, I don't know. You never know, man. है भी तुम्हारी है को. है ना अच्छा वैसे like you know हम मजाक तो कर रहे हैं लेकिन this is like sort of one of the problems girls face in online communities के उनको सबसे पहले prove करना पड़ता है कि we are Exactly. indeed girls for all the thirsty Exactly. men in the community जो कि हम बिल्कुल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. Not thirsty men either. It's like in Just any everyone. in any gaming platform basically or any online platform. लोगों को ये मानते नहीं कि यार लड़कियां भी गेम्स खेलती हैं या लड़कियां भी हो सकती हैं मैचेस के अंदर. I remember Warframe में I was in a clan जिसमें I told people I was a girl. लेकिन फिर भी the first time I talked on a voice channel, a few weeks later माइक इतने अच्छे थे नहीं हम कि माइक हमारे पे अफोर्ड कर सकें. कोई सस्ता सा माइक पकड़ा था दोस्त से. तो पहली दफ़ा मेरी जो आवाज़ लोगों ने सुनी they were like, oh we thought you were joking. मैंने कहा अच्छा यार ठीक है. Khair, so like since this episode we have a girl with us, so we're mostly going to be focusing on problems women face in online games, and my let's say God. not only in online games. No Because like pressure. Sadia, you're from Pakistan, Mhm. and you know Pakistan isn't exactly known for the profound respect it gives women. So you know, would you like to mention anything from your university or something that kind of stands out कि अगर कोई लड़का होता तो उसके साथ नहीं होता लेकिन चूंकि मैं लड़की हूँ लिहाजा सबके पास एक कार्ड है ये प्ले करने के लिए कि यार ये तो लड़की है ना इसको पकड़ते हैं. इसको पकड़ते हैं. I would actually reference that a bit towards my education as well कि मैंने बैचलर्स की है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में. ऊपर से मैं हूँ एक लड़की. सबसे पहले जब क्लास में कोई भी कोर्स हमारा नया स्टार्ट होता था पहले तो लड़की कहते लड़कियों से नहीं होना या अगर ग्रुप्स बनते थे कि यार इससे तो काम होना ही नहीं है. Specifically not because I wasn't good at the subject or anything. It's only because I was a girl. Oh, जो it hurt a lot as well. Like यार ठीक है अगर बंदा डिग्री करे पहली बात कुछ ना कुछ तो आता ही होगा. दूसरी बात anytime you're in a project doesn't mean that everyone else has to do the work and you're not going to pitch in. So I think the worst thing about it all is that you're underappreciated to the point where they don't obviously they don't recognize कि भाई इससे भी काम आता या ऐसे भी ये भी एक चीज कर सकते हैं. That's the worst thing.
ये से तो होगा ही नहीं, तो कर ही नहीं सकते, ये लड़की है, इसने क्या करना है, लाइक पुत्र तू आना जरा बताती तुम्हें. So like in addition to working just as hard as a guy does, you have to work extra hard True. just to get the normal recognition that a guy would get. और तब भी मेरे ख्याल से फिर लोग कहते होंगे कि यार चलो सही है कर लिया लेकिन सिर्फ एक दफा किया अगली बार शायद ना कर पाए. I think. या एग्जैक्टली, या अगर कोई अचीवमेंट हो भी जाएगी, या ये जो लड़की है इसने उन्हें हायर कर लिया, या ये दोनों ने हाँ अपना. अच्छा. I am actually guilty of this. Damn. And Damn. लेकिन देखो I'm trying to improve. Say this is the whole point of the boys where Time to we cancel. point out our Cancel him. we point out our collective mistakes and then we strive to be better people. That's the whole point of the boys. And Sadia, then welcome to the boys. थैंक यू. Temporarily. Temporary. बिलाल को ढूंढने निकले हम लोग. फवाद को हमने भेजा हुआ है. फवाद कुछ बोल नहीं रहा क्योंकि फवाद अभी रास्ते में है. बिलाल भाई को ढूंढने जा रहा है. बिल्ली ब्रो को पकड़ के वापस लाएगा. खैर फवाद वापस ना है, मसला नहीं है. Oh, hey. I'm taking Bro, up it's Bilal's Fawad Love responsibility. Week. I'm here. बिलाल नजर नहीं It's आया. Fawad Love Week, bro. Oh sorry. नहीं वो तो एक एपिसोड में था. That's already done, man. Oh yeah. हाँ चलो. अच्छा boys वैसे अब ना let's come back to Sadia's thing. अब मैं तुम दोनों से सवाल करता हूँ कि have you ever felt like when you're competing with a girl in either academics या games या whatever, you feel like you feel like she's getting an advantage because of her gender, or do you feel as if जैसे like आपने कुछ sexist आपका कोई behavior है just because she's a girl, जैसे फर्ज करो अगर कोई लड़की CS खेल रही है तो you're like यार ये तो लड़की है इससे नहीं खेला जाएगा, ये तो डरती होगी गन से, any stereotypical thought that you get. It doesn't have to be something that actually comes out of your mouth, लेकिन जो वो कहते हैं ना जो आपकी सबसे पहली थॉट होती है वो आपको जो environment जो आपको shape करता है उसकी तरफ से आती है, and the second thought that you get which allows you to shape the first thought is the actually your nurture. तो आप लोगों को कभी इस तरह की कोई stereotypical और sexist सी बात आई है दिमाग में when you're in front of girls? Damn. As he not holding back any punches. Time I to see. cancel. Yeah man, I'm smart. Kappa, not smart. Time to One cancel the IQ. podcast. So बताओ, feel free. It's fine. Everybody has stupid thoughts. But you start. Why not you start? कौन मैं? Yeah. अच्छा. Okay. I guess I do have a couple of thoughts. पहले like अब ना सही है, there's a lot of very talented females online playing video games. लेकिन अब सीन ये हुआ है कि I have been blessed with the amazing luck of always playing with someone who's pretty entitled. Or when you play with someone who's entitled, and I'm pretty sure इतनी दफा नहीं मैंने खेला किसी entitled बंदी के साथ, लेकिन it would have probably been one game. लेकिन ये नहीं होता कि जब आपका एक mindset ही ऐसा हो तो when you have one experience like that, you tend to be biased towards it, even though if there are like a million other experiences that go directly against what you've experienced, but you're still biased towards it. Confirmation bias है आपका. तो डोटा की डोटा की बात है, and it was right around the time when क्या है लड़कियों का क्या था ई स्पोर्ट्स के जो अनाउंस हुआ था, एक्सिमियस रेड आई थिंक, डोटा का रोस्टर अनाउंस हुआ था. एंड मैं मी एंड द बॉयज अदर बॉयज, ये बॉयज नहीं थे, बिलाल था मेरे साथ सपोर्ट में, लेकिन बिलाल MIA गया हुआ है आज. वी यूज्ड टू प्ले डोटा and we've actually played with some of the girls on the roster, and they were honestly not that good at the game. Unki like वैसे some were like 4 out of 5 were really good, लेकिन and we're not talking about eximius, I'm just talking about girls who normally play. उनमें से एक थी who used to have a boyfriend who was in the divines, divine or immortal था, and he used to carry her through games. And yeah, so she kind of got this entitlement ke like she's great at the game because the guy would win the lane for her, so she'd think that she was great at the game, and then when we actually started try harding, so we'd almost always get someone to replace her, and that would kind of sting for her because she'd be like ये लोग मुझे निकाल रहे हैं क्योंकि मैं लड़की हूँ. So yeah, and
when she confronted us with that, we were like, ah, nahi, aise nahi hota. We lied, obviously. And then we added her and played a few games with her. She was bad, and it kind of just gave me a confirmation bias. Uske baad, like, I've played with some girls who are really good at the game. We can, जब भी game शुरू होती है ना, first करो I'm playing carry and the girls playing support, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होगी कि she's going to be very bad at the support role and I'm going to have to play the game solo, which is a very stupid thought to have, but it is a thought that I used to have. अब नहीं आती. अब क्यों नहीं आती? Because अब I don't play Dota anymore. It's a shit game that nobody should play. सही है. I hate that game. It has ruined my life. जवाब तुम अपनी पारी पे आओ. Damn. My turn. Should I just answer in this sense कि video games के बारे में बात करनी या more? किसी की चीज़ के बारे में, like. Okay, I'll say two things. One, in games, I don't think I've really had that kind of thought that she's a girl and she's worse than me. I've had friends who actually play better than me that are women. Side turn. Yes. Okay, stop it. Don't cancel me. Okay, and yeah, but I do feel in this education field when I was doing my bachelor's, we had some girls in our class that would actually take advantage of their gender. How to explain this? Maybe we have this thing in our society where women would usually use this thing where she would ask a guy to do the assignment for her and he would do it willingly without any issue. That kind of situation, I've seen it with my own eyes. Luckily, I've never been in that kind of situation myself. Yeah, but not to say that all women are bad in that regard, but there are some hardworking women, and not some. There are a lot of hardworking women in education in Pakistan specifically. और हमारा confirmation bias आ जाता है फिर बीच में. हाँ. फिर हमारा confirmation bias आ जाता है कि हर Yeah. लड़की मांगेगी अब Yeah. हमसे कि ये करके तो Yeah. That. That happens in university a lot, honestly. एक लड़की होगी क्लास में जो अपनी वुमेन कार्ड का एडवांटेज लेके लड़कों से काम Yes. कराती है और फिर सारे क्लास के लड़के अज्यूम करते हैं कि क्लास की सारी लड़कियां ऐसी हैं, which is a very Yes. stupid to think, honestly. Yeah, exactly. I had examples of those in my bachelor's. I saw some girls who are very good at the studies, and I also saw some girls that are like, they're difficult to explain. फवाद भाई, आप माइक म्यूट करके बैठे हुए, खैरियत तो है? आप बोलना चाहते हैं? मेरा माइक थोड़ा खराब चल रहा है इसलिए. तो फवाद भाई, आपके तो एक्सपीरियंसेस होंगे. आई एम प्रीटी श्योर आपके एक्सपीरियंसेस होंगे. आप सब अपने experiences बताएं, then I'll give a bit of my या 2 फिर तुम cents हमें on जज it करना. all. Do you? Not too harshly. Wait. Do you guys mind if I Harshly is add fine. some experiences I've had in Germany? Sure. I don't know. Deutschland, ich liebe Deutschland. I would say it's mostly just in our culture. It's not something that I found in this culture here, because जितने भी मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं, even the girls and stuff, they are kind of lazy. We are a lot lazy. But I have seen essence of that thing in being lazy in girls more compared to guys here. I'm talking about German people. What I mean by that is, I'll see in my project, I've had experience with a girl that had dragged out a simple task that could have been done in a week to like 3 months. She dragged that simple task for 3 months without any, I don't know, probable reason. But yeah, the university, our supervisor was completely okay with it. So I don't know what to make of it. But it's not my responsibility to say anything to her. But but that's just one example. And in that same project, I had another female colleague that was kind of working hard, even harder than me. So
there's that. फवाद ब्रो हाँ आप बताएं. हाँ तो मेरा मैं काइंड ऑफ एक काउंटर एग्जांपल टाइप दे दूंगा सही है इस बात पे कि सिर्फ लड़कियां नहीं जनरली काफ़ी लोग हैं जो बेसिकली करते हैं किसी और पे काम डालने की कोशिश करते हैं True, true. सीनियर्स अपने जूनियर्स पे काम डाल देते हैं हर किसी करते हैं इट्स जस्ट आपके पास एडवांटेज क्या है इन दैट रिगार्ड्स True. सम जो आपके पास मैंने मैंने ट्राई किया था मैं नहीं कर सका था लेकिन मेरे सीनियर्स ने लोगों के साथ किया हुआ है और लेकिन हार्ड वर्किंग की बात करते हैं तो मेरे लाइक यूनिवर्सिटी में आउट ऑफ अगर 3 करो तो काफ़ी सेमेस्टर्स में दो बंदियां मेडलिस्ट होती थी सही. Okay. लाइक 3-4 बंदे तक हर टॉपर्स में होती हैं तो इट्स वेरी हार्ड टू से किसी एक जेंडर पे ब्लेम डाल दो इट इज़ जस्ट मोस्टली आपके पास क्या टूल है यूज़ करने के लिए there are guys who can जो है but charismatic people can just get work out of everyone without doing a single thing. True. Charismatic नहीं, manipulative. Manipulative. But Yeah, but to be that's the same manipulative to a thing. certain degree, you have to be a bit charismatic in the first place. No. True. Yeah. True. That's like a sub requirement. Yeah. Or Sparky. It's Oh, a sorry. Or Fawad. yeah. नहीं but that was it. like, चलिए सादिया बाजी क्या आप हमें क्या जज करेंगी? Okay, time to क्या mute हमारी our क्या mics. सेंटेंस है? म्यूट करो माइक को म्यूट करो. तो चलिए सादिया बाजी डॉट. अच्छा पहली बात तो ये है आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड जो आप सबके पर्सपेक्टिव हैं. पहले मैं आती हूँ अजी की बात पे जो कंफर्मेशन बायस और ना आई एम जस्ट गोइंग द ऑर्डर जिसमें आप लोगों ने जो कंफर्मेशन बायस और एंटाइटलमेंट की आपने बात की है. The entitlement thing, I have noticed in women as well, but I have also noticed it a lot in men. Which तो जब भी मैं especially female streamers या female online gamers को करते हुए देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि what is the percentage of female entitled players, supposedly entitled players, compared to the overall number of female players. I mean, पहले से लड़कियाँ बहुत कम होती हैं तो जब बीच में इस तरह की जब आती हैं दे स्टैंड आउट मोर इन द फर्स्ट प्लेस. एक बात ये. दूसरी बात आई डू अग्री अ बिट विद द होल एंटाइटलमेंट थिंग क्योंकि देयर ओके मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस तो देयर आई प्ले फोर्टनाइट. पहली बात देयर वाज दिस ऑनलाइन पेज ऑन फेसबुक which had a bunch of gamers in it from all over Pakistan. Usme one of the girls, she sent me a DM and said that hey, I have this separate Facebook page of only female players who play Fortnite or any other games. It's like a zero toxic community. We try to be very supportive of one another, streamers being as men and everything. So if you'd like to join, I was happy when I heard that. I'm like, oh gosh, there are more women, more girls. Hello, sign me up. I joined that and I left 2 weeks later. The reason being when they said that they are creating a very non-toxic environment for women, it was one of the most toxic groups I have ever been in, and I have been in a bunch of them. For example, I can't get into specifics or else I'll be found out. But let's just say that there was Can you send us the link after this episode? We would only for educational purposes. Yeah, only for research and education. If I still have it around, I will. It was a private group, I say. Okay, so for example, there was a tournament that they held amongst themselves, amongst the girls. It was going to be streamed by a few of the streamers as well. There was a bit of miscommunication upon the starting time of it, so a few people threw a giant fit about it. यहाँ तक कि जो tourney हमारा चल गया था. It was supposed to be multiple matches. पहला match हमारा हो गया था and a few of the people couldn't join it. One of the heads of the group, who was told continuously कि इस time पे start होगा, इस time पे होगा, इस सर्वर पे होंगे, आ जाना. 3-4 घंटे पहले notifications आ रही थी कि आ जाना time पे. That one of the heads couldn't make it, and when she found out that the match was going on, उसी schedule पे she threw a fit. तुम लोगों ने मेरे बगैर कैसे स्टार्ट किया? मैंने ग्रुप सारा आपस में मैच किया था, तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं. लोगों की अपनी फैमिली इश्यूज आ जाते हैं and everything, and it was a shit show, and this is mildly putting it. ये और कुछ और इवेंट्स बीच में हुए हैं, आपस में लड़ाइयाँ उसी एक ग्रुप के अंदर. To 1 minute they're fighting, they're at each other's throats, and it's not a pretty fight.
लाइक वो जो होते हैं ना कि प्रॉपर फाइट होती है, मजाक जो वाली प्रॉपर फाइट नहीं, ब्रॉल होता है. हाँ प्रॉपर ब्रॉल, एंड एन आवर लेटर completely blown over, किसी को किक कर दिया, किसी को हटा दिया, फिर कुछ बातें चल गई, and it was very weird. Oh my हफ्तों God. हफ्ते बाद I was like, okay Johnny, I am not going to be a part of this. Oh Lord. Oh my God. Yo, if I may interject, मैं like Billi भाई मौजूद नहीं है, तो I'm just going to say something that he's going to understand very well. Safe space, by the way. Okay. You may continue, Sparky. What? You'll Okay. have to elaborate on that. You can't just drop something like that. बिल्ली भाई बताएंगे वो आगे comments में. आप continue. Sorry for cutting you off. It's fine. Okay. ये बात है, अब जब मैं बाकी बातें मूव करती हूँ जेंडर एडवांटेज पे, अबाउट हाउ लड़कियाँ फिर लड़कों का फ़ायदा उठाती हैं, काम वगैरह निकलवा लेती हैं, स्पेशली इन इंजीनियरिंग ये लड़कियाँ होती कम हैं, तो I've seen that happen to girls from guys in the management department as well, so I won't say something that is specific to women only. So if you look at like something like management sciences में अगर आप देखो जहाँ पे ratio is a bit more even of girls to boys, वहाँ पे लड़के ही काम भी लड़कियों के साथ कर रहे होते हैं, but that doesn't, I'm not saying कि लड़कियाँ ये काम नहीं करती, लड़कों के साथ करती हैं. I'm doing my masters right now और legitimately मेरे पिछले semester एक बैच में ऐसे हुआ है जिसमें one of the class की लड़कियाँ, she got a bit sweet on the TA of one of the subjects. यहाँ तक कि जो TA साहब थे वो सारी असाइनमेंट, सारी क्विजेस, सब कुछ उसको दे रहे थे, और जब क्लास के प्रोफेसर को पता चला उन्होंने टीए को हटा दिया, बंदी की चीज़ें अलग से खुद चेक करनी शुरू की. एंड दीज वर एडल्ट्स 27 years plus, all of them. तो ये एडवांटेज वाली जो बात है, आई थिंक इट्स मोर ऑफ everyone's trying to just ease their way through life, जहाँ पे उनको नजर आता है कि they have to do minimum work to get the maximum output, वो करेंगे, चाहे it's men, चाहे it's women. It might be more prominent for you from the women's side, the way it's more prominent for me from the men's side. I put it like that. So I guess at the end of the day, it depends more on how your moral compass allows you to utilize all the resources you've been given to help yourself breeze through life, whether it's ethically right or ethically wrong, basically. Usually it's ethically wrong, Yeah, but obviously. yeah, true. और True. फवाद भाई आप कुछ कह रहे थे? I mean सादिया, sorry. I think फवाद भाई का भी यही पॉइंट है तकरीबन, people putting work on others वाली बात, ये वही बात आती थी एंड पे, जहाँ पे बंदा अपना फायदा निकाल सकता है वो निकालेगा. I think that's irrespective of gender. सही. अच्छा, basically. Does anybody want to add anything to it? No. पहले से बता दूं, I am very open to discussion. कोई भी बात बोलोगे, I will not mind it. तो ये ना हो तुम लोग बात पीछे रख रहे हो. इस माइंड से किसने माइंड कर लेना है? अच्छा, इसी की बात ना करें. I think this was enough. वैसे ये सही बात हो गई clear. अच्छा, तो खैर I'm going to move towards a slightly different topic, and it's basically like it does still concern to women. Lekin of course I'm going to tell a guy's perspective about it, क्योंकि obviously as you can see I'm not a girl. Well, you can't see, but मेरी आवाज लड़कियों वाली नहीं है. Voice changer, man. Voice changer. Yeah, possibly. I could be a girl. I mean, if any guy wants to hit me up, just hit me in the DMs. It's fine. Yeah. अच्छा, खैर. तो अब ना मुझे किस्सा याद आया था. हम लोग गए थे, किस्सा नहीं actual what happened, I think किस्सा ही कहते. सॉरी, मेरी उर्दू बहुत बुरी है, प्लीज डोंट कैंसिल मी. तो हम लोग Burger boy. बर्गर बॉय. हम लोग कश्मीर जा रहे थे. कश्मीर में हम हाइक कर रहे थे केल से अरनकेल तक. Kale is basically the lower side, and you need to hike for about like half an hour to like 45 minutes to reach Arankale. सही है. हम लोग सारे यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स गए हुए थे, लड़के थे लड़कियां थे. It was like it was a decent ratio of लड़कियां तो लड़के, and we're all pretty chill friends. Like हमारे दरमियान इतना कुछ awkward नहीं है. तो बीच में ना
there are some people that hang around near the hiking areas to help people up with their luggage and stuff. तो हमारे पास आ रहा, हम बॉयज़ के पास आया, हमें कहते हैं कि सर आपका लगेज उठा लूँ। हम लाइक नहीं, मैंने उठाया हुआ है आराम से। लगेज भी नहीं था यार, वाज जस्ट स्मॉल बैग्स। दे जस्ट वांट एन एक्सक्यूज टू अर्न मनी, दैट्स बेसिकली व्हाट एवरीवन डज टू टूरिस्ट these days. तो खैर हम सब ने मना कर दिया। तो अब मेरा दोस्त मुझे कहता है यार एक काम करो हसन, तुम और एक और मेरा दोस्त है, तुम लोग लड़कियों के पास चले जाओ, क्योंकि उसे पता था कि इस लड़के ने आना है लड़कियों के पास। और लड़कियों अब सही है यार, देयर इज a little bit of difference between guys and girls, and के लड़कियों को जो स्ट्रिक्ट बोलना नहीं आता कि नहीं, और ऊपर से लड़कियां स्ट्रिक्ट बोलें भी लड़कों से कि यार नहीं, यहाँ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, लड़कों ने फिर भी ना कहना है कि यार शायद ये ना ही कर रही है, विच इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम इन पाकिस्तानी सोसाइटी एंड I जस्ट द agree वर्ल्ड with इन that. जनरल I'm के sorry for या cutting you off बीच में इस हाँ बात पे, लेकिन I कोई बात very नहीं agree with that point. Sorry. या Continue. या हाँ, साइड नोट गाइस, अगर लड़की बोल दे ना, अगर वो उसकी आवाज़ हल्की है एंड शी इज सेइंग नो, शी मींस नो, प्लीज जस्ट गो अवे। अच्छा खैर, तो उन्होंने ना कर दी, बड़ी रिस्पेक्टफुली ना की थी, एंड इट वाज अ फर्म नो। सही है, उसमें कोई मुद्दा नहीं रह गया था ये सोचने का कि यार शायद लाइक इट्स लाइक 99.9% नो, लेकिन 0.0% हाँ है, तो यार उनके साथ ही हो जाना। खैर वो बॉय साथ घुस गया, और अब वो मेरी एक दोस्त है, उसके साथ, अब मैं नाम तो जाहिर सी बात है नहीं लूँगा, वो उसके साथ ही इज़ ट्राइंग टू स्ट्राइक अप अ कन्वर्सेशन विद एवरी गर्ल, एंड ही इज़ गेटिंग ब्रूटली रिजेक्टेड बाय एवरी सिंगल वन ऑफ देम। लेकिन मेरी एक दोस्त है, शी वेयर्स काइंड ऑफ नॉर्मल क्लोथिंग, which is obviously no excuse. सही है, she said no, kindly fuck off, लेकिन उस बंदे को समझ नहीं आ रहा था, he couldn't get the message. तो she kind of calls me back कि यार हसन इधर आओ, and she starts talking with me. तो at first I was like यार ये मेरे से बात क्यों कर रही है, like it's a long hike, we're all tired, हमने पानी पीना है, we should just quietly hike. लेकिन when she started talking to me ना, I could just see कि उसके बिल्कुल पीछे, like inappropriately पीछे और बहुत करीब वो दूसरा बंदा खड़ा हुआ था, एंड वो हमारे उससे Damn. बहुत कोशिश कर रहा था कि यार ये बंदी मेरे से बात करे, बंदी, एंड आई कुड सी द कंसर्न ऑन माय फ्रेंड्स फेस। शी इज अ वेरी नाइस पर्सन, तो जब व्हेन समबडी आस्क्स हर समथिंग शी फील्स ऑब्लिगेटेड टू रिप्लाई, एंड वो बेचारी जितना मिस कराना चाह रही है वो नहीं कर रहा, वो बंदा उसे मिस, तो शी जस्ट कॉल्स मी ओवर, वी गुड फ्रेंड्स, और वो मेरे से बात करना शुरू कर देती है, एंड द गाय स्टिल डज नॉट गेट अ हिंट कि शी इज टेलिंग यू टू प्लीज लीव। तो वो फिर बीच में, अब सीन ये है कि हम दोनों हाइकिंग कर Hmm. रहे हैं साथ, इट्स काइंड ऑफ लाइक हम लोग वो वाला रास्ता लेते, शॉर्टकट होता है ना, तो देयर इज नो एग्जैक्ट पेव्ड पाथ, यू हैव टू एक्चुअली Hmm. स्टेप ओवर। तो पकड़ पकड़ के एक दूसरे को चढ़ा रहे थे हम लोग ऊपर। ही इज लाइक Hmm. आगे चढ़ते हैं, मेरे से आगे भाग के जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, हाथ आगे करते हैं, बाजी मुझे हाथ दे दें, बाजी मुझे हाथ दे दें, और वो मेरी शक्ल देख रही है, मेरी दोस्त। हाँ, तो अब फिर मैं अपनी दोस्त को पकड़ता, मैं उसको उस साइड से ले जाता, और मुझे उस वक़्त बहुत तब चढ़ी थी कि इस बंदे को मैं लात मार के नीचे गिरा दूँ, एंड आई आल्सो फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हर कि यार व्हाट द फक मैन, एंड दैट मेड मी रियलाइज़ कि दिस इज़न्ट समथिंग दैट गर्ल्स हैव टू फेस वंस इन अ व्हाइल, दे हैव टू फेस इट ऑलमोस्ट Hmm. एवरी डे, कि गाइज़ हू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट नो मीन्स नो, एंड दैट्स द स्टोरी बेसिकली, दैट्स हाउ आई बिकेम अ बिलीवर। बिलीवर। What the hell? Yeah. Damn. That's a वन sad सेकंड event. वन सेकंड वन सेकंड वन सेकंड वन सेकंड मैं से एक चीज वापस पॉइंट आउट कर रहा हूँ। हसन अहमद सेड लड़की मेरे से बात करती है, एंड आई एम थिंकिंग मेरे से क्यों बात कर रही है। Yeah, टिपिकल हसन okay. अहमद। That is a call out I was not expecting, सख्त लौंडा है. but it's true. मेरे से कोई क्यों बात करेगा? सादिया बाजी, please interject, please bestow us with your wisdom. वो आपको चक्कर यार आएगा? यार 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 पहले तो मुझे इस बात पे धचका लगा कि तू मुझे बाजी बुला रहा है। कभी Damn. इन द लास्ट 4 years we've known each other तुमने कभी बाजी नहीं बुलाया मैं मुझे। तो स्पार्की ये कहता कब हूँ। से? I call you Sparky. यार, actually it's like तुम्हारा your name is like really long ना, तो अब मेरे दिमाग में I don't know, मेरे दिमाग में automatically feed हुआ है कि जिसका नाम बहुत लंबा है वो बाजी है, तो yeah, that's why. ठीक है। So please interject with your infinite knowledge of womanly affairs. Infinite Potentially knowledge infinite. of womanly affairs. Yeah, Potentially potentially womanly infinite. affairs. Potentially infinite. Potentially. ओके पहली बात तो ये है, ये जो आपने सिचुएशन बताई है, हम्म।
तो गर्ल आराम से कहती है भाई नहीं, अब वो पीछे पड़ा होता है. दिस इज अनफॉर्चुनेटली वेरी कॉमन. And unfortunately, it is not specific to the type of clothing you're wearing. You can be in Western attire, इस तरह lines पड़ेंगी. You can be in Eastern clothing, ये lines पड़ेंगी. You can be in a hijab, यही lines पड़ेंगी. If I give you my own experience, I usually wear a mix of Eastern and hijab attire. I've gone in full Eastern, दुपट्टा सर पे, दुपट्टे के बगैर, यही पड़ता है. I've gone full hijab, abaya, scarf वगैरह सब कुछ, तब भी ये होता है. So it's just something you have to समझोगे, ingrain in yourself कि जब इस तरह बात होती है you have to speak rudely or speak extremely harshly, जो मुझे personally बहुत बुरा लगता है करते हुए. क्या ठीक है इंसान से बात करे, मैं भी तमीज़ से बात करूँ, लेकिन usually talking to another person of the opposite gender in a sort of respectful tone, वो ये बात ले जाते हैं कि यार बाजी लाइन मारी हमारे ऊपर. लेकिन भाई मैं तुमसे इंसानों की तरह बात करी, लाइन कैसे है भाई? तो it really puts you off any sort of interactions. बाहर जाने अक्सर there were days in the, अगर मैं बताऊँ back in 10th grade 11th grade, एक दो दफ़ा मार्केट में ऐसे हुए यहाँ तक कि मेरे अम्मी को कहा था कि मैंने दोबारा बाहर नहीं जाना. ये क्या मजाक है. तो ये होता है. और I don't know if it's more specific in Pakistan because of the upbringing कि जितनी segregation हम लोग लगते हैं लड़कों और लड़कियों के बीच में, उसकी वजह से when women do go out of the house it's more pronounced. or if it's a general thing all over the world, मैं इसका नहीं कह सकती. लेकिन पाकिस्तान की किसी तो यहाँ पे यह काफ़ी है. यार honestly like अगर 1,00,000 लोगों में भी एक लड़की है ना कि लेकिन आपके अंदर इतनी like common decency होनी चाहिए कि यार that's another human being with feelings and emotions who's just trying to do what they normally do. जा रही हैं डबल रोटी खरीदने जा रही हैं, रोटी खरीदने जा रही हैं, like just be a normal person, not be a thirsty piece of shit, just let the other person live. I don't know, it isn't that hard, is it? Maybe. I don't know. ये जवाब को पकड़ो, Why are you पकड़ asking लिया us? है, found Why him, are you asking found us? him, Hello? found him. इसको cancel करो. जवाब ये तो होगा. जवाब is found. Please, hello, don't cancel me. Yeah, bro, you're getting अच्छा cancelled. on इस तरह देखा जाए तो जो बात हुई थी, अच्छा हाँ जो मैं बात कर रहा था कि हाँ sorry Fawad, I'm so sorry, please talk, I'm so sorry. हाँ, Shut up. मैं खाली ये कर रहा था कि जो उसने बात की थी अभी स्पार्की ने, बात करेक्ट है वैसे. सेग्रीगेशन आई गेस डज प्ले अ पार्ट. लाइक ये इशू ज़्यादा तभी नोटिस करते हैं उन लोगों में करते हैं जो बॉयज़ ओनली स्कूल में नॉर्मली पढ़ते हैं. एंड बाय द वे आई एम नॉट कॉलिंग एनीवन आउट, बट नॉर्मली बस होता ही है कि उनके जहन में हमेशा ये डाला जाता है, उनके जहन में बात आ जाती है कि लड़कियां अलग ही मखलूक हैं. Damn. तो फिर वो दे डोंट नो हाउ टू टॉक टू पीपल, या बेसिकली जनरली उनके लिए या तो बड़ी स्पेशल बात होती है तो बिल्कुल बात नहीं होती. इट्स ईदर वन ऑफ द टू एक्सट्रीम्स. ये कोई नॉर्मल की भी बात करना वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में, ये लोग काफ़ी लोगों से इश्यूज होते हैं. ये सुनने में आया है मुझे अभी तक, सीनियर से ग्रेजुएट से. लोग ग्रेजुएट करते हैं यूनिवर्सिटी में भी किसी से बात नहीं कर पाते, फिर आगे जाके वर्क प्लेस में भी फिर वो इंसल्ट That's बन a big जाते हैं problem, हमारी तरह. you know. क्या तो Damn. Sorry. What the heck? Yeah, we're You not don't have to call us out. Astaghfirullah. अच्छा मैं एक बात बोलूँगी वैसे बोलो, it's बोलो. आप 10 much बातें better बोल रहे हैं in this situation is much better in the cities. In the way कि it's not as bad in the cities. Islamabad ले लो, रावलपिंडी, लाहौर, even Peshawar. लेकिन if you go towards more of the rural side, वहाँ पे ये इस extreme पे कि लड़कियाँ, I know classmates. I did a bachelor's here in Islamabad. तो इस्लामाबाद की ये बात है कि पूरे मुल्क से लोग आ रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़, लाइक यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ने के लिए. सो यू हैव पीपल फ्रॉम सेंट्रल सिंध, यू हैव पीपल फ्रॉम साउथ केपी के, फ्रॉम सेंट्रल पंजाब, तकरीबन हर जगह से. द बिगेस्ट थिंग दैट स्पेशली द गर्ल्स हैव शेयर्ड इज़ कि इस्लामाबाद में दे आर मच फ्रीयर इन द रिगार्ड कि ये लोग यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर भी जाएं, मार्केट्स तक भी जाएं, लोग इतना उनको लाइक समझो ताड़ते नहीं है, इतना छेड़ते नहीं है, या इतने रूमर्स नहीं स्प्रेड होते कि ये मार्केट जा रही है सौदा लेने के लिए, पता नहीं कोई और काम के लिए भी जा रही होगी साथ में. उनके अपने एरियाज़ में, गाँव वगैरह में, या इवन मोहल्लों में बैक होम जाती थी तो फिर ये बातें फैलती थी. और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये रूमर्स फैलते हैं डायरेक्टली समझो कि उनके पेरेंट्स की तरफ, फिर उनकी फैमिलीज़ में, फिर उनकी फैमिलीज़ के अंदर उनका एक इम्प्रेशन सा बन जाता है कि ये तो
आवारा बंदी है, इसने तो पता नहीं क्या कुछ भी किया होगा, मार्केट से फिरती रहती है. Even if you're just going to take a walk, breath of fresh air, see कौन से इस सीजन के ब्रांड के कपड़ों में क्या क्या नए डिजाइन आए which you can't afford. It sucks basically. You are either privileged enough to grow up in a city to live a normal life. Okay, it's basically luck. Like I'm very lucky कि मैं इस्लामाबाद में या major cities में बड़ी हुई हूँ, and I did not see a lot of this stuff until very later on in life. Like the majority of the women in Pakistan are not as lucky. So, like about sorry. हाँ बोलो, sorry मेरी screen dead हो गई थी. Damn. Why don't we? Okay. I have quite a few sisters. Not Mashallah. mashallah. And fortunately, at least to my knowledge, I've never heard any of my sisters going through anything closely relevant to the kind of experience your friend went through, Akashi. Yeah, but I have, I don't know, but how to explain it. It's this culture of Tarna, basically. If you'll see guys just staring at a girl if they spot one on the street. So I have this weird habit. If I see a guy looking at another girl like full on stare mode, then I'd actually stare at the guy full on stare mode. I don't know why. Alpha jawab. I don't know why I actually do that And for some I reason. applaud you for that because I do that too. From time to time, especially अगर मैं अपनी छोटी बहन के साथ रोड पे की जा रही है, हम दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं, कभी कभी बाइक्स पे जब मर जा रहे होते हैं, वो घूर के देख रहे होते हैं गाड़ी के अंदर, मैं मुड़ के घूर के देख लेती हूँ. Honestly, it pisses me off so much. हम लोग एक दफा लाहौर गए थे यूनिवर्सिटी के दोस्त, और हमारे साथ like I think 4-5 लड़कियां थी, and we had to literally make a goddamn circle around them and like sort of like थोड़ा irregular सा circle because इतने बदतमीज लोग थे. They were like purposefully rubbing their knees with rubbing their shoulders with them, या कोई पीछे से आके बहुत करीब चलना शुरू होता था. तो I had to we had to actually not सिर्फ मैं अकेला भी नहीं था, सारे we had to actually make a circle around them, and that is like when you have to do something like that just to protect your friends, you know you're living in a messed up society. अब वो लाहौर था. I'm calling you out लाहौर. Cancel हो रहे हो तुम. Damn. There is a pretty adult topic that I would like to discuss, but maybe not in this episode. That might be the reason why this happens in our society, Sex ed. but not sex ed per se. It's just like hormonal changes, teenage puberty. It's an idea that could potentially get me cancelled. So that's what I want to discuss. I don't want to put देखो, we won't push it. I think we can discuss it and just cut it out if you want later. Divide it into multiple episodes. Up to you. अबे इतना lazy है, he's not going to edit all of it. I am not afraid of discussing it with you guys. You don't want to get cancelled by Sadia? No. Oh my goodness. Oh no. I don't want to extend this episode anymore. That's what I want to. That's what I'm trying to do. Let's go over Sadia. वैसे like let's say आपको हमने वजीर आज़म बना दिया है, you know. Damn. मैं नहीं वोट करूंगा आपके लिए, आप बहुत डिच कराते हैं, लेकिन let's say आपको एक दिन के लिए वजीर आज़म बना दिया है, पाकिस्तान को डिच करा देगी, and you're tasked with you know not solving women's issues, which is obviously not something you can do in one day or even a year. Lekin you have the authority to make some laws and regulations for the benefit of women in the streets. Because let's face it, आप हर किसी को re-educate नहीं कर सकते. Some people are so deeply rotten and spoiled कि उनके world view को आप challenge करना is like
बैंस के आगे बीन बजाना, मतलब उनसे आप बात ही नहीं कर सकते, तो यू एक्चुअली नीड स्ट्रिक्ट लॉज एंड रेगुलेशन कि लाइक यू नो मेक इट अ क्राइम टू एक्चुअली डू दैट स्टफ ताकि लोग सुने. तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? पहली बात है, this is a very slightly or very slightly, I don't Loaded know, सवाल. controversial topic to speak on. I did not know how much in detail I can go. क्योंकि पहली बात तो ये है कि a lot of this समझो thinking has a lot of strong roots in religion as well, to many extremes. तो सबसे पहले बात ये है कि any change that people even try to bring, okay, for example, if we're already going controversial, the Aurat March. A lot of people have looked at it as the way that it शुरू में जब ये Aurat March start हुआ था कि bringing to light women issues. अब जैसे हर साल जब होता है उसके मीम्स फैल रहे होते हैं, साइंस को मिटा के लोग अपनी चीज़ें और डाल रहे होते हैं, वल्गर चीज़ें डाल रहे होते हैं. तो सबसे बड़ी बात जो नजर आती है वही है कि इन दी एंड पहले लोगों की थिंकिंग चेंज करनी होगी, जो ये काम बहुत मुश्किल है. Improbable ही है. You can't re-educate everyone, and the society that we live in, Pakistan specifically अगर आप कहें तो it's very hard to even bring a different perspective of a topic to the table, क्योंकि most people aren't willing to listen. सही बात है. खुद ही आपस में सोच लो, अगर if you're talking about this in a general group of, if I were to talk about this in a general group of guys, even if I say from work or from other those groups में, I can tell you a couple of people लाज़मी जिन्होंने अपने पॉइंट से नहीं हिलना या जो अपने व्यू से नहीं हिलना, and they have every right to their own view. लेकिन most of the time their view most of the time the views are directly oppressive. Yeah, exactly. Religion से भी तकरीबन हट गए. बंदा सोचता है यार मैं किधर जाके सर मारूं. Yeah, exactly. Like मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, it was like बंदा बंदी को कहता है कि इस्लाम gave you all your rights 1400 years ago. तो the ladies like हाँ तो दो ना. Exactly. Exactly. नहीं, I that agree. is a big point. एक और point, लोग अक्सर फिर इसको चीज़ को compare करते हैं सऊदी अरेबिया से. Yep. अब सऊदी अरेबिया में there are a lot of restrictions on women which are based purely because of culture, less so because of religion. But a lot of people take that as a whole standard of religion in general. जैसे वो ड्राइविंग वाली बात आ गई थी, औरतों को वहाँ पे ड्राइविंग की परमिशन अभी रिसेंटली मिली है. Like I know people अपने मोहल्ले के जो कहते हैं तो सऊदी में भी औरतें नहीं चलाती, तुम लोग लाइसेंस ले रहे हो. I mean, भाई what, पहली बात तो ये it's completely cultural, इसमें religion का कोई लेना देना है ही नहीं. तो there are a lot of perceptions को बंदा सोचता है कि अगर डिस्कशन करना भी चाहो उनके साथ, वो सुनने से पहले उनको गुस्सा आता है. पहले गुस्सा करते हैं, फिर गालियां देते हैं, फिर खुद साइड पे जाते हैं. You just end up making a bigger fool of yourself in a way. ये जो उनके अपने आइडियाज हैं वो और स्ट्रांग हो जाते हैं. और जो कुछ अगर बंदे डिस्कस करना भी चाहे वो कोई सुनता भी नहीं है. हाँ सही, मतलब if you stop talking to them they're going to think of it as यार हम तो आर्गुमेंट जीत गए तो हमारा वर्ल्ड व्यू सही है. Exactly. लेकिन अगर उसके ऑपोजिट जाओ तो वो अपने आइडियाज और स्ट्रांगली लेना शुरू करते हैं कि नहीं हम तो हैं ही ठीक. Like डिस्कशन ही नहीं होती. सबसे मेन बात है डिस्कशंस ही नहीं होती. It sucks honestly. वैसे खैर, the moral of today's lesson, guys, just because you think you're being nice to a girl doesn't mean you are. If she says no, kindly leave. दूसरी बात, सादिया तुम ऐसा करो, we're going to let you wind up for today. चलो शाबाश. Yeah, I'll do the closing. You can no pressure. Yeah, no pressure. चलो शाबाश. अब कैसे wind up करूँ? I'd say the one thing that I will take this from a gaming perspective. भाई अगर तेरे टीम में एक लड़की आई है, वो वॉइस चैट में बात कर रही है, इंसानों की तरह बात कर, हेलो हाय कर, कि नहीं कोई जरूरत नहीं, ओ बच्ची ठीक है.
Or you don't need to become all formal for a day. There's a woman in your team. I mean, if you're playing a game, you're there for fun. You're here for the same reason as she is, to wind up after a stressful day. बस यार एक दो matches खेलो, बंदे उड़ाओ जाओ. ठीक है? Just make them just make them feel welcome. खेलने आई हैं, खेलो, कहानी मगाओ. There's no need to be awkward. वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो. ठीक है? Also probably she's underage, तो थोड़ा ध्यान से. I guess that's it. Thank you for having me on this podcast. Completely random. मैंने जवाब को एमी बोला था यार ऑन कब करा रहे हो, उसने कहा चल आ जा. ठीक है. हाँ वैसे We had a different topic वैसे. if anyone हाँ we had the topic for today was actually bullying, like, and we're going to move it to next week. Like, and if anybody in the comments feels like they have something that they'd like to share with everyone, we're always open to, you know, discussing stuff. Like, you know, yeah. So, and वैसे Sadia, thank you for coming today. No, thank you for having me. Jawad, thank you for editing everything. Inshallah, I'm going to start editing. Fawad, thank you for hopefully यार स्क्रिप्ट में कुछ लिखा था. Say something nice about Fawad. Fawad, thank you. Thank you for existing. Thank you for existing. Billi bro, I'm not sure if you're listening to this podcast or not. लेकिन please call बंद कर दीजिए. खैर है, boys पे वापस आ जाएं. It's, you know, we need you. We're the boys, you know. We're not the three musketeers. We're the four of I can't think of anything. But we're four. So yeah, you know, you're four. Fair. Thank you. We are fantastic. Yeah. So yeah, thank you everyone for joining today. And you know, if you have anything you'd like us to discuss, or if you'd like to come to the boys, be sure to let us know in the comments. Thank you all for, if anybody is still listening. जो दो बंदे सुन रहे हैं ना, shout out to Taha Khan for always listening to all our podcasts completely. Thank you. And Sadia भी सुनती है वैसे. Thank you. Yeah. We'll catch you next Sparky time. ने एक sitting में सुना है सारे. Nice. तीनों Oh episodes. yes, एक setting में बैठ गया. Oh, you're going to love episode 4. It's going to come out. It's already come out when this is going to be on YouTube. But that's all from the boys for today. Thank you everybody, and Allah Hafiz. Bye. Allah Hafiz. Bye. रोक दी. चलिए नहीं